Assalamualaikum dear students, how are you all? Hope so you all are fine. It's Math Grade 1 lecture number 11. I'm your math teacher from 6th School of Tomorrow City Campus, Bhalwal. So dear students, Grade 1, any idea what is our lecture today? आज हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है? प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था? We use number line. And again आज हमने क्या यूज करना है? नंबर लाइन. नंबर लाइन को यूज करके हम क्या करेंगे? क्या कर रहे हैं हम? एडिशन या सब्ट्रैक्शन? यस, हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं. नंबर लाइन को यूज करके हमने क्या करना है? सब्ट्रैक्शन. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करूंगी और हम इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे. वो कैसे? पेंटिंग से ड्रॉ करके. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन ऑफ योर टाइप, कोई भी आप मुझे बताएंगे योर चॉइस, मैं वो यहाँ पे राइट कर दूंगी. सो मैं राइट कर रही हूँ 5 minus 2. 5 minus 2. So 5 minus 2 का आंसर क्या है? How would I know? मुझे कैसे पता चलेगा? What is the first number here? 5. 5 पे आपने क्या करना है? Stand करना. हो गया stand. अब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, so we will move backward. हम पीछे की तरफ आएंगे in this way. So how many numbers I have to move backward? 2. 1, 2. So which number is here? Yes, here is 3. 5 minus 2 equals to 3. 3 is our answer. This is how you use number line to subtract. So open your book, page number 9. Take away from that. हमें 10 से पीछे जाना है. First question he has done for you, so we'll start from the second one. B. 10 minus dash equals to 5. यहाँ पे उसने blank space छोड़ी हुई है, you can see. अब वो कह रहा है कि 10 में से हम कितने माइनस करें कि हमारे पास 5 आएगा. यहाँ पे उसने आंसर हमारे पास क्या दिया है? 5. You know बेटा के 5 plus 5 equals to 10 होते हैं, तो हम 10 से स्टार्ट लेते हैं. How many numbers will move backward? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Which number is here? 5. So 5 is our answer. Very good. Next देखेंगे. अब इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं. Let's see how. 10 minus 6 equals to 10 minus 6. Here is 10. 10 पे मैंने यहाँ पे मैं बनाती हूँ एक पैरेट. क्या बना रही हूँ मैं? पैरेट बना रही हूँ. वेरी गुड. ये क्या है? पैरेट. ये पैरेट अब इसने कितने नंबर बैकवर्ड मूव करना है? व्हाट इज देयर? 6. सो पैरेट यहाँ से स्टार्ट करेगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6. इस 4 के आगे क्या करेगा पैरेट? 6 कर जाएगा. वेरी गुड. Which number is here? यहाँ पे कौन सा नंबर है? यहाँ 10 से पैरेट बैकवर्ड उसने फ्लाई किया है. फ्लाई करके वो यहाँ पे आया है 4 पे. So which number is here? 4. 4 is our answer. Very good. So the remaining 4 questions is your homework. Look at question number 9. 10 minus 8. ये आपको प्रीवियस वर्क की तरह आपने लाइन ड्रॉ करनी है. So how will you draw line? माइनस कर रहे हैं ना हम. So 10 के सामने मैंने कितनी लाइन ड्रॉ करनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. How many lines I have to cut? कितनी लाइन्स मैं कट करूंगी? 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. I have cut these 8 lines. How many lines are left? कितनी लाइन्स मेरे पास रह गई हैं? 2. So 2 is our answer.
Similarly, आपने बाकी क्वेश्चन से सॉल्व करने हैं. This is your homework task. You have to solve it on your board. Now, dear students, open your notebook. The very first thing which you've done is to maintain your date and day. Take your homework. What is our topic? हमारा टॉपिक क्या है? हम क्या कर रहे थे? Yes, हम वर्ड काउंटिंग कर रहे थे. क्या कर रहे थे हम? वर्ड काउंटिंग. वर्ड काउंटिंग कहाँ तक हमने किया? वर्ड काउंटिंग 15 तक. Very good. So now we'll start from 16. टॉपिक के नीचे की लाइन छोड़ देंगे. मार्जिन लाइन से इस तरफ 2 और 3 ब्लॉक छोड़ के आप राइट करेंगे. SIX 6 TEEN 16. 16 के सामने आप क्या राइट करेंगे? 16. देन क्या? 17. SEVEN 7. TEEN 17. 16 and 17. What I write here on the board? 16 and 17. Okay, the remaining lines you have to complete. You have to write here. So this is all about today's work, grade 1. आज आपने क्या किया? Subtraction using number line and आपने word counting किया. Make sure the learning at home. So see you tomorrow in grade 1. Allah Hafiz.